Hello friends, welcome. Welcome to this presentation from Rising Pearl. हम हैं आपके होस्ट आपके दोस्त रॉय। आइए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जो ब्रांड न्यू सीरीज है सीरीज 2, जिसकी टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यह है हमारी वेबिसोड नंबर 2 एंड आज हम दोस्तों कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी रिकैप ऑफ इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सो दिस इज अ पार्ट 2 दोस्तों। सो वेबिसोड 1 में वी हैव टॉक्ड अबाउट द पार्ट 1। सो चलिए दोस्तों, अब तक हमने देखा है फ्यू थिंग्स अबाउट इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सो आज इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में वी विल टॉक अबाउट, आपने देखा दोस्तों कि जो हमारी लास्ट प्रेजेंटेशन थी, वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड हाउ वी राइट अ लीनियर इक्वेशन। दीज आर थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट वेबिसोड और पार्ट 1 में। एंड आज हम बात करेंगे दोस्तों अबाउट दीज 3 टॉपिक्स 3, 4 एंड 5। हाउ वी सॉल्व लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज द रूट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन एंड हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ रूट ग्राफिकली। So ये जो हमारी 3 टॉपिक है, this will be this is what we are going to discuss today in this presentation. Now अगर हम आपको कहते हैं दोस्तों कि मान लीजिए we give you something like x plus 4 is equal to 10. आपको मालूम है दोस्तों, this is an example of a linear equation in one variable. Why? Because आपको मालूम है from our series 2 that this is actually an algebraic expression, and then similarly this is another algebraic expression. जब आप दो expressions को when you equate them, ये जब equality sign डालते हो, then this becomes a equation. Now clearly यहाँ पे this is your variable term, right, x. So यहाँ पे you have only one variable, मतलब कि जो unknown है आपकी, जिसे हम variable कहते हैं, as you recall, जो variable है, the word variable, right, इसका मतलब है ये जो word है variable, that means it varies, right? So हमें मालूम नहीं है कि exact value of the variable क्या है. So this is basically a equation in one variable. क्यों one variable? Because यहाँ पे x is the only variable. You do not have like y, z, etc. Right? So this is only one variable. So we have an equation in one variable. And why are we calling it linear दोस्तों and not quadratic or something else? The simple reason is दोस्तों, आपको मालूम है from again our series 2 polynomials कि इस particular equation में the degree of the variable is 1, right? मतलब कि अगर हम आपको देते something like मान लीजिए x square minus 4 is equal to 0. So this also is an example of quadratic equation because यहाँ पे you have degree 2. Right? So you have still one variable x. So अगर ये जो है आपकी, this is again a equation in one variable x, but ये है quadratic equation because x is raised to power 2. But linear equation मतलब है अगर power 1 है, then it is a linear equation. So दोस्तों, now how do we solve a linear equation like this? So आपने देखा है दोस्तों, what we have learned earlier in our earlier classes is that जब कभी हमें एक ऐसे example दी जाती है, so चलिए दोस्तों एक काम करते हैं, let us write this. So this is our linear equation and this is an example of a quadratic equation. So हम linear equations के बारे में बात कर रहे हैं ना। आपको मालूम है दोस्तों from your earlier classes that अगर हमें x plus 4 equal to 10 दी जाती है, so what we want to do is, जब कभी हमें इक्वेशन मिलती है we have to find out the value of the variable, right? So इसे सॉल्व करने के लिए what we do is we subtract 4 from both sides of the equation. हमें मालूम है जब हम सेम नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, the equation doesn't change. So अभी इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर ये है आपकी इक्वेशन, so what you do is you do x plus 4 and we subtract minus 4 from both sides. So यहाँ पे you have minus 4 and similarly ये बन जाएगी आपकी 10 minus 4 and then this will give you, so plus 4 minus 4 will cancel out, so आपकी रह जाएगी x equal to 10 minus 4 is 6. So जब आप इसे सॉल्व करोगे दोस्तों, x plus 4 is equal to 10, so answer is x equal to 4. So x की वैल्यू है 4. इसका मतलब है the value, sorry, the x की वैल्यू है 6. इसका मतलब है 6 is the solution for this equation, right? So ये जो equation है, इसकी solution or the answer or the value of the variable is 6 and इसे also sometimes we call it root of the equation.
सो सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन या फिर द वैल्यू फॉर विच जो the value of the variable that satisfies the equation that is the same as solution is the same as root of the equation. Now similarly दोस्तों मान लीजिए now अगर हम आपको देते something like y minus 2 is equal to 13, how will you solve this equation? So again दोस्तों what we will do is हम यहाँ पे since minus 2 है so हम both sides में we want to add plus 2. Why? Because minus 2 plus 2 will cancel out and हमारे पास रह जाएगी सिर्फ y. So we want to actually add plus 2 on both sides. And again हमें मालूम है अगर आप same number को both sides of the equation में add करते हो या फिर subtract करते हो, it doesn't change the equation, right? So equality sign is still valid. So in this particular case, what we do is we say y minus 2 plus 2 is equal to 13 plus 2. So यहाँ पे देखा दोस्तों because we had प्लस 4 हमारे पास प्लस 4 थी हमने बोथ साइड्स में वी सब्ट्रैक्टेड माइनस 4 राइट ताकि प्लस 4 माइनस 4 विल कैंसल आउट एंड रह जाएगी सिर्फ x. सो सिमिलरली दिस इज अनदर लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल y. सो यहाँ पे बिकॉज वी हैव माइनस 2 हम बोथ साइड्स में वी आर एडिंग प्लस 2. सो देन वी गेट अगेन माइनस 2 प्लस 2 कैंसल्स आउट. सो वी हैव y इज इक्वल टू 13 प्लस 2 इज 15. सो हमने देखा दोस्तों सो ये जो 15 है y इक्वल टू 15 this is the answer, this is the value of y, and इसका मतलब ये है दोस्तों कि if you put this value of y here then it will be basically it will be the solution for this equation. So आप 15 अगर आप यहाँ पे डालते हो so 15 minus 2 is 13, इसका मतलब है then 13 is on the left hand side and 13 is on the right hand side. So this is the value that makes this equation true. And हमने देखा दोस्तों ये जो solution है we also call it root of the equation, which is called the root. So जब कभी आप ये टर्म देखोगे कि root of the equation आपको immediately ध्यान में रखनी है root and the solution of the equation are the same. And जैसे हम बात कर रहे हैं दोस्तों solution का मतलब क्या है? Solution का मतलब है that value of the variable that makes the equation true. So in this case we said x is equal to 6. This was a solution because आप अगर यहाँ पे 6 डालते हो you get 6 plus 4 10 and then so left hand side is equal to right hand side, correct? Now दोस्तों एक और काम करते हैं. चलिए let us take one more example. This time मान लीजिए we take something like 2x right minus 3. So मान लीजिए we will take 2x minus 3 is equal to 17. So how will we solve this equation? So यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं कि जो वेरिएबल की टर्म है which is x right उसकी कोएफिशिएंट क्या है. Again दोस्तों series 2 में we talked about polynomials, terms, coefficients, the degree of the polynomial, all of that. So यहाँ पे the coefficient of x is actually 2, right? So यहाँ पे how we solve is exactly the same. So हम क्या करते हैं पहले we look at the non-variable term because हमें उसे हटानी है. So अगर यहाँ पे -3 है so we can actually say we will add +3 on both sides. Then हमारे पास रहेगी 2x minus 3 plus 3 equal to 17 plus 3, right? Then minus 3 plus 3 will cancel out and रह जाएगी अभी 2x equal to 17 plus 3 is 20. Now हम क्या करते हैं दोस्तों now हमें we need to find out value of x. तो अभी हम both sides को भी divided by 2. Why 2? Because 2 से divide करने से it will cancel this out and रह जाएगी x. And दोस्तों again हमें मालूम है from our earlier classes कि आप same number को you can also multiply divide on both sides and then equation doesn't change. So अभी हम both sides को भी divided by 2. So अगर इसे divide करते हैं so this cancels out. So यहाँ पे रह जाती है x and 20 by 2. So that gives you 2 10s are 20. So हमें यहाँ से मिलती है दोस्तों that x is equal to 10. So the root of this equation is x is equal to 10. And when you put the value 10 here आप देखोगे 2 10s are 20. 20 minus 3 70. So दोस्तों चलिए this is how actually we solve linear equations. आपने you have seen this in your prior classes already. Now we will just highlight यहाँ पे दोस्तों some of the things that you should definitely keep in mind when you are solving for a equation. When same number is either added or subtracted from both sides, it does not change the equation. And हम लोग इसे we use this all the time. Similarly,
when same number is either multiplied or divided on both sides, it doesn't change the equation, right? So मान लीजिए दोस्तों, in this case अगर आपके पास अभी if you were given 3x by 5 is equal to मान लीजिए, let us write here something like 12. So what is the value of x? So यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों? So first you are going to multiply both sides because you have 3x by 5. So you want to multiply both sides by 5 ताकि 5 and 5 will cancel out, right? So आप लेते हो 3x divided by 5. You multiply both sides by 5, and then यहाँ पे you have 12 times 5, right? So in this side आपके पास 5 and 5 cancels out, so आपके पास रह जाती है 3x, and on this side you have 12 5s are 60. Now अभी ये जो 3x equal to 60 है, अभी आप both sides को you want to divide it by 3. So ये हो गई आपकी 3x divided by 3 is equal to 60 divided by 3. So x 3 and 3 cancels out. So यहाँ पे रह जाती है x is equal to 3 20s are 60. X equal to 20. So दोस्तों ये हमने देखा दोस्तों, we always use these two methods to solve an equation, right? एक और चीज है दोस्तों, कभी कभी instead of saying we are adding both sides by certain number या multiplying both sides by certain number या dividing या subtracting both sides by certain number, कभी कभी दोस्तों we use the word transposing. उसका मतलब यह है, again it is the same thing like जो हमारी पहली example थी जहाँ पे we talked about x plus 4 is equal to 10. So instead of saying you are subtracting both sides by 4 because then plus 4 minus 4 will become 0. Simply lot of times what we also, एक और way of thinking about this is you take the 4 on the other side. So आप इसे transport कर रहे हो from one side to the other side. Transport almost like आप बस में चढ़ के इसको कहीं पे भेज दे रहे हो या फिर you are sending it to the other side. So and then जब भी हम transport करते हैं कोई भी चीज को on the other side of the equation, sign always changes. So इसका मतलब है this becomes, अगर आप कहते हो transposing 4 from left hand side to right hand side, so the word है दोस्तों transposing. Transposing, right? Now again friends, you have learned this in your earlier classes. So this is the same because आप जब इसे दूसरे साइड में लेके जाते हो because it is plus, so ये अभी क्या हो जाएगी, अभी लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x रह जाएगी because 4 अभी उल्टे तरफ चली गई है. So you will get 10, but because 4 अभी प्लस थी इस साइड में, यहाँ पे आने के बाद it will become minus 4, and this will be 10 minus 4 is 6. So दोस्तों, so again instead of saying subtracting both sides by 4, you can say transposing 4 from left hand side to right hand side, x is equal to 6. एंड सिमिलरली दोस्तों, अगर आपके पास यहाँ पे एक पॉजिटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव टर्म होती, मतलब अगर मान लीजिए जैसे कि हमने देखी, अगर आपके पास x minus 3 is equal to 12 अगर ऐसे आपके पास है, so आप you can again say transposing 3 from left side to right hand side, you will get y is equal to, सिर्फ y रह जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में, you will have 12. अभी ये नेगेटिव 3 जो थी, this when it is transported on this side, it will become plus 3. So y की वैल्यू होगी अभी 15. Right? Now दोस्तों, this is how you solve a linear equation in one variable. Now चलिए दोस्तों, with this background in mind, why don't we go ahead and solve the equations जो हमने हमारे webisode 1 में we started taking a look at it, right? So sum of two numbers is 35. One number is 15 more than other number. Find two numbers. So मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों, like we discussed, we are detective and जब कोई हमें वैल्यू मालूम नहीं है, we assume the variable की वैल्यू है x, right? So what all information is available? So दो नंबर दी गई है, ये एक नंबर है, ये दूसरी नंबर है. Now the sum of two numbers, यहाँ पे इनकी जो sum है that is equal to 35, right? Similarly ये है हमारी condition 1. Similarly one number is 15 more than other number. यहाँ पे एक quick correction दोस्तों, अगर आप if you compare this presentation with webisode 1, आप notice करोगे वहाँ पे we had taken this as 10, we have actually changed it to 15 here.
ठीक है, आपको मालूम चलेगा why, because it will just give us a cleaner number instead of getting into some decimal value. So one number is 15 more than other value, the other number. So दो नंबर है, उनकी सम है 35, एंड एक और चीज है, जो एक नंबर है दोनों में, दैट इज 15 मोर देन अदर नंबर. सो जो बड़ी नंबर है, मान लीजिए, दैट इज स्मॉलर नंबर प्लस 15, राइट. सो ऐसे करके दोस्तों हमें दो कंडीशन दी गई है. सो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम अस्यूम करते हैं जो स्मॉलर नंबर है, अगर उसे हम x पकड़ते हैं, देन जो लार्जर नंबर है, दिस बिकम्स x प्लस 15, राइट. सो ये जो पहली कंडीशन है, वहां पे हमें मालूम है x इज अ स्मॉलर नंबर, एंड देन बड़ी नंबर इज x प्लस 15, दैट इज इक्वल टू 35. सो अगर हम इसे अगर यहां बिठाते हैं, देन वी विल गेट x plus 15 is equal to 35, right? Because ये है छोटी वाली नंबर, ये है बड़ी नंबर, so two numbers are added and उसके सामने 35. So इसे हम जब सॉल्व करते हैं, solving this equation, we will get x. So आप अगर ब्रैकेट को उठा देते हो, so you will get x plus 15 is equal to 35. और x plus x is 2x plus 15 is equal to 35. चलिए दोस्तों, let us continue it here. और अभी you have x plus 2x plus 15 is equal to 35. हम अभी we will subtract 15 from both sides. So we get 2x plus 15 minus 15 is equal to 35 minus 15. और this implies जो 2x है, so ये plus 15 minus 15 will cancel out. So 2x is equal to 35 minus 15 is 20. Now at this point दोस्तों हमें x की वैल्यू चाहिए, so हमें इस 2 को हटानी है. So we want to now divide both sides by 2, right? So अगर at this point if we divide both sides by 2, हमें मालूम है that the equation doesn't change. अगर हम सेम नंबर को या ऐड करते हैं on both sides, या सब्ट्रैक्ट करते हैं, या मल्टीप्लाई करते हैं, या डिवाइड करते हैं. So if we divide both sides by 2, then 2 and 2 will cancel out. So जो x होगी, that will be equal to, now 2 tens are 20, so 10. So दोस्तों हमें मालूम चल गई अभी, ये जो है the solution और the value of variable x is 10. So इसका मतलब क्या है दोस्तों? So x जो है वो है हमारी स्मॉलर नंबर, राइट. सो अगर x जो स्मॉलर नंबर है, अगर वो आपकी 10 है, देन जो दूसरी नंबर है दैट इज 10 प्लस 15, दैट इज 25. सो जो दो नंबर है दोस्तों, दैट इज जो द टू नंबर्स आर 10 एंड 25, राइट. सो चलिए इसे ऐसे नहीं लिखते हैं, because then this will mean that x has two values. So अगर x है आपकी 10, so जो दूसरी नंबर है that is 10 plus 15 which is 25. Now दोस्तों अगर आप ऐसे करके लिखोगे then this will be very confusing. आपको अगर एग्जाम में, टेस्ट में, if you have a question like this, the way you are going to answer is, चलिए इसे थोड़ा systematically लिख लेते हैं. You will answer it in this fashion, right? आप लिखोगे in sentences में, let smaller number is x, then larger number will be x plus 15. क्यों? Because it is given that larger number is 10, actually 15 more than the smaller number, right? इसके लिए smaller number x होने से bigger number is x plus 15. It is also given that sum of two numbers is 35. So x plus 15 is equal to 35. So this means that x plus x is 2x plus 15 is equal to 35. इसे हम लिखते हैं equation 1, right? And then now subtracting 15 from both sides of equation 1. And क्यों subtracting 15? Because you have plus 15 जिसे you are trying to take it out, हटाना चाहते हो आप इसे. So you know, subtracting 15 from both sides, you get now 2x plus 15 minus 15 is equal to 35 minus 15. और यहाँ पे these two cancel out, right? So 2x is equal to 35 minus 15 is 20. इसे we call it equation 2. And then dividing both sides of equation 2 by 2 we get, and why 2 दोस्तों? Because we want to get the 2 out, right?
So 2x by 2 is equal to 20 divided by 2. 2x divided by 2 equal to 20 divided by 2. So x is equal to 10. So smaller number is equal to x, which is 10, right? The smaller number thi wo thi x, which is equal to 10. So larger number is x plus 15 is equal to 10 plus 15 is equal to 25.